So when we go to any Indian gay party, they will play item songs for sure, and we love item songs. Oh, gay people adore item songs. I know it. One such item songs I personally loved, and I'm sure many of you loved it. It was in 2004 when Khaki film came, the debut of Lara Datta, and she performed on the song of ऐसा जादू डाला रे. और ये गाने ने ऐसा जादू डाल दिया कि अभी भी ये गाना सबका पसंदीदा है. Lara looked stunning on the camera, and there was a person behind her stunning looks. Of course, a makeup person, Kumar Iyer. Kumar just made magic on screen. He did not just make them look beautiful, he brought the best out of them. Let the film be Dil Se, No Entry, Cocktail, Rockstar, Kacche Dhage या 1000 से भी ज़्यादा ad films, Kumar Iyer has always rocked it. अपनी 25 साल की करियर इस मेकअप और ब्यूटी इंडस्ट्री में बॉलीवुड की इस चकाचौंध की दुनिया में रहने वाले इस सितारे ने हमेशा चमकीले दिन नहीं देखे, कुछ अंधेरा भी देखा है. आज हम बात करेंगे कुमार अय्यर से और जानेंगे उनकी स्टोरी उनकी ज़बान. Today we are in Bandra. I welcome you all in episode number 6 of Closet to Kitchen with Nakshatra Bali. Hi, welcome. How are you? I'm very well. Thanks for coming. So Kumar, tell us about something like your childhood and your life in Mumbai, how it was growing up as a gay man in 90s. Childhood. See, my parents, we are from Kerala. And my father came to Bombay when he was around 18. And my mom was born and brought up in Bombay. Okay. So she could speak fluent Marathi, and instead of being we are Tamil Ayers. Okay. So we are from Palakkad. So, but my mom could speak fluent Marathi also, and we used to stay in for a bit in Santa Cruz, and then my father got another job in the Reader's Digest, which is a American publication, and we bought our own flat in Chembur. Okay. So Chadanagar, which is almost like a Kerala village. I understand. Which I know. is, have you been there? I stayed in Chembur. I stayed there for 10 years. I know it Yes. very well. You'll see, early in the morning, you'll see Suprabhatam, and Very much. you'll see all these mamas and mamis and veshtis and patasaris and all going to the temple with flowers in the hair and diamonds blazing in the ears. So I grew up in a very conservative environment in Chembur. I was growing up, puberty hit. And I realized, I'm not like the rest of the friends, who I have. They all, of course, when I was a small boy, the boys would all be playing games and, whatever, Yep. these kind of sports and cricket and, all these kind of things. Whereas for me, it was more like, home stuff that, in Marathi, they ऐसा बोलते हैं Batukli, right. Batukli. It's like a kitchen set Right. and all that. So वो मैं बहुत खेलता था बचपन में. ये सब गुड़िया उड़िया तो नहीं था. Okay. But ये किचन सेट वगैरह होता था मेरे पास. And मैं बहुत प्रिटेंड करता था कि मैं कुछ खाना बना रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वही जल्दी करना है, मेरे हस्बैंड को काम पे जाना है, लेट हो रहा है. That's This cute. kind of Yeah. games I used to play with the girls. And बस ऐसे ही छोटे से बड़े हो गए, अच्छा माहौल रहा और बहुत that time life was very simple. तो वो एकदम simple life से बड़ा हुआ मैं. All right. Thank you. That's interesting. But how was it like, growing up as a gay man back then in 90s or 80s in Mumbai? See, मुझे तो 80s में तो इसका बिल्कुल इल्म नहीं था कि यार Okay. Because मुझे पता भी नहीं था कि nobody spoke about sex. All right. अभी तो टेलीविजन में रेडियो में कहाँ पे भी तभी तो सोशल मीडिया नहीं था. Yeah. दैट टाइम फेसबुक कुछ भी नहीं था, मोबाइल फोन्स नहीं थे, कुछ नहीं थे. Right. यू हैड जो भी फ्रेंड्स होते थे तो उनके साथ हम लोग ये लोग बात करते थे, लड़के लोग आपस में बात करते थे, वो लड़की को देखो, इसको देखो, उसको देखो. और मैं हमेशा बोलता था कि तुम लोग ये लड़की को ऐसे नहीं वो हमारी सिस्टर जैसी है, तुम लोग ऐसे नहीं करो, इट्स नॉट राइट, पाप लगेगा. एंड आई यूज्ड टू बी दैट.
And at the same time, I used to have a few friends who are older than me, Mhm. who जब 15-16 years में थोड़ा बहुत मूछ वूछ आ जाता है, Right. अब वो लोग बैडमिंटन खेल के उनका टी शर्ट एकदम छाती Sweaty, में बाल, yes. स्वेटी, वो सब देख के मुझे कुछ तो पता नहीं कि बदन में एक सनसनी सी करंट जैसे लगता था कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, पर मैंने अपने आप को क्वेश्चन कभी नहीं किया, Okay. बिकॉज मेरे घर में कभी किसी ने, बिकॉज मैं बचपन से माँ के कपड़े साड़ियाँ वगैरह पहनता था, Alright. और माँ कभी बोलती नहीं थी कुछ, अरे बच्चा है, इट्स फाइन, Yep. एज लॉन्ग एज ही इज घर पे जो भी कर रहा है। प्लस स्कूल में भी ये अपने प्लेज होते थे, तो उसमें भी लड़की का पार्ट करता था, और फिर हमारे बिल्डिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी में भी होता था, तो वहां पे भी आई यूज्ड टू वेट कि कब मुझे लड़की का चांस मिले रोल लेने के लिए, बिकॉज वो दिन मुझसे सबसे ज्यादा प्रशंसा मुझे वो दिन मिलती थी। Right. तो वो दैट एडिक्शन, वो लालसा थी अंदर कि अच्छा। मैं कुछ करूं। नाइस। जैसे मुझे पता है कि तुमने बहुत बड़ा करियर शिफ्ट किया, अपने दिल की बात सुनी एंड यू वेंट फॉर इट। जी। प्लीज उसके बारे में बताइए, क्योंकि बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी है। यहाँ पे काफी लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, जहाँ पे माँ बाप पुश कर रहे डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, एंड दे आर नॉट एबल टू लिव देयर ड्रीम्स। प्लीज टॉक अबाउट दैट। जी, यहाँ पे तो अनफॉर्चुनेटली माँ बाप का कुछ था नहीं, बिकॉज 87 में फादर गुजर गए और 91 में माँ गुजर गई। बट 90 में मैंने एक 5 स्टार होटल में अपना होटल मैनेजमेंट कंप्लीट करके मैंने जॉब करना शुरू किया, मैनेजमेंट ट्रेनी का। तो क्या हुआ कि उन दिनों में मैं जवान हो चुका था, एंड मेरे काफी फीमेल फ्रेंड्स होते थे, वो लोग सब मेरे से बहुत अच्छे थे, बट ये आदमी लोग जो थे ना, दे यूज्ड टू बी वेरी होमोफोबिक। Okay. वो लोग कभी भी कुछ ना कुछ हम मुझे ठेस पहुंचाते थे, उनको दुख देते थे, कुछ भी बात करते थे, तू ऐसा क्यों है, तू ऐसे बात क्यों करता है, तू ऐसा क्यों है, वैसा क्यों, एंड इससे मैं बचपन से ऐसा हूँ। राइट। एंड मुझे लग रहा था कि ये लोग, मेरा कोई नहीं है, बिकॉज मम्मी डैडी भी नहीं है, अभी फिर काम पे भी मुझे जाने को भी मन नहीं कर रहा था, बिकॉज वहां पे जाओ तो वही ताने, वही लोग कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। तो फिर एक दिन ऐसा आया कि मैं इतना डिप्रेशन में चला गया कि मैंने अपना जॉब को बिना इवन पेपर्स दिए हुए मैंने जॉब पे जाना छोड़ दिया। और फिर 1 साल तक मैं घर पे रहा, और था थोड़ा बहुत, माँ ने पैसे छोड़े थे, पर ऐसा नहीं कि बहुत कुछ था कि जस्ट बेसिक नेसेसिटीज के लिए घर था, सिर के ऊपर छत था, और बेसिक जो भी खाने के लिए था वो था, बट मैं दिन में सोता था और रात को जगता था। मैं बहुत डिप्रेशन में था, और तभी मेरे पास एक ओनिडा टीवी था, एक छोटा सा एक 14 इंच का टीवी होता था, बॉक्स जैसा, कलर टीवी था, तो वो उससे जी टीवी और ये सब आता था वो टाइम पे। तो जी टीवी में मैंने एक शो देखा जिसमें खूबसूरत नाम था। तो उसमें इट वाज अबाउट लाइफस्टाइल, फैशन, ब्यूटी एंड ऑल दैट। 92 की बात है ये, 92-93 की बात है। तो उस शो में होस्ट तो कोई था, और बट सिल्वी करके दिल्ली के एक बहुत मशहूर हेयर स्टाइलिस्ट। सिल्वी को आप देखेंगे तो आपको लगेंगे कि आजकल ये जो रूपॉल वगैरह तो ये अभी आए हैं। सिल्वी तो उस जमाने में पूरा बाल वाल सब करके, नेल पॉलिश लगा के, इंडिया में बहुत एक्सेप्टेंस था तभी भी। टीवी में आते थे ये लोग, और गृहिणियों के लिए देखने के लायक आफ्टरनून का शो था, लोग देखते थे, और फैमिली के साथ देखते थे, कोई शर्म वरम नहीं होती थी, सब लोग देखते थे। फिर कॉरी वालिया, he used to come and he used to teach about makeup. Lakme used to sponsor, so it used to be Lakme खूबसूरत. And I used to see Corey Walia talking, and Corey's English is very far, and he speaks very well, he's a well put together guy. He used to speak with his hands, and the way his speech was, his diction and all that. And I kept looking at him and I said, wow, what a guy. I mean, look at him, the way he's facing the camera. And that is what something tempted me, कि ये लोग कुछ अलग कर रहे हैं और ये लोग मेरे जैसे हैं। That was the time कि मैंने first time ये word gay सुना। ये word gay सुना। फिर उन दिनों में क्या हुआ, मैं ये जॉब वॉब छोड़ के मैं घर पे ही था,
तो बॉम्बे में एक मैगजीन तभी बॉम्बे था, राइट तभी अशोक राव कवि का एक मैगजीन हुआ करता था, उसका नाम है बॉम्बे बॉम्बे दोस्त। दोस्त। आपने आपने जी पढ़ा है? बिल्कुल बिल्कुल। तो बॉम्बे दोस्त था, बहुत लोग छुप छुप के पढ़ते थे, कोई भी इंडिया टुडे के अंदर अंदर बॉम्बे पेपर के अंदर डाल के छुप 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 के, के। राइट। उसमें ऐसी कोई फोटोज न्यूडिटी कुछ भी नहीं था, सिर्फ इतना ही था कि सबकी जर्नी के बारे में स्टोरीज। अशोक को इतना प्रॉब्लम होता था वो फिल्म में, वो बुक पब्लिश करने में, उसमें he didn't even have ad space. Nobody wanted to advertise also. Advertising, that's right. So वो बांद्रा में एक वीना शॉपिंग सेंटर करके एक जगह पे वहां था। तो फिर मैंने धीरे धीरे करके मैंने अपना ट्रेन्स में when you're traveling in Bombay काफी कुछ होता है। Very much. हाँ, मुझे ये पता नहीं था। और मैं जब 20s में था तो I used to be quite very good looking. Yeah. And every time I would go on the train and कहीं ना कहीं रोज कोई टच कर रहा है, कोई पास में आके चिपक रहा है, कोई ये कर रहा है वो कर रहा है, और ऐसे ऐसे करते करते मेरी धीरे धीरे कॉन्टैक्ट भी बढ़ते गए। ओके। और फिर ताज के पीछे एक गोकुल्स करके एक बार, एक क्वार्टर बार हुआ करता I था। know it. It's still there. अभी भी है। Yes. तो उधर अंदर एयर कंडीशनड सेक्शन में सैटरडेज को गेज लोग मिलते थे। Oh, okay. तो मैं वहां पे जाता था और मैं ये जवान 22-23 साल का उम्र का लड़का, बोलता था अच्छा से, दिखता था अच्छा, मैं आ गया वहां पे और सब लोग मुझे आओ हमसे भी दोस्ती करो, हमसे भी बात करो। तो वो फर्स्ट टाइम लाइफ में वो मुझे ये अपनापन महसूस हुआ वहां पे, तो मुझे लगा कि मेरे जैसे लोग मुझे मिल गए। राइट। फिर वूडूज करके एक नाइट क्लब खुला वहां पे, रेडियो क्लब के पास ही है। तो मैं BST बस की ऊपर के नीचे और ऊपर होता है, ऊपर के इसमें VT स्टेशन में उतरता था, सीधा चढ़ता था, फटाफट अपना मेकअप करता था, और आई यूज्ड टू गो टू वूडूज में एक बार मैं बाहर खड़ा था तो कॉरी वालिया मुझे दिख गए। और वो एक बहुत बड़े मॉडल थे उस जमाने में, उनके साथ वो वूडू आए थे। तो मैं उन दिनों में मुझे गोरा बनने, बिकॉज मैं सांवला हूँ, तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे गोरा बनना है। तो मैं 3-4 शेड्स लाइटर फाउंडेशन अपने फेस में लगा के मेकअप वेकअप करके अच्छी तरह से जैसे भी आता था मैं वूडूज में चला गया। और फिर वहाँ कॉरी से ब्यूटीफुल फेस, रॉन्ग बेस ही से। सो आई न्यू कि वो क्या बोल रहे हैं, बोलना चाह रहे हैं। तो मैंने उनसे बोला कि आप ऐसे बोल रहे हो कि मुझे इसका आइडिया नहीं है इतना, तो इससे कोई बात नहीं, ये मेरा नंबर है। और मैं उनके टच में रहा और वो मेरे टीचर बन गए। सो 94 के करीब मैं उनके साथ I started working with him. One day he told me that tomorrow we're shooting with Denzel. Denzel Square is a very senior photographer, and we're going to be shooting in a place called Manori Bell, which is on the outskirts of Bombay. It's a beautiful village of Gorai. And he said, who's the model? I said, who? He said, Aishwarya Rai. I said, what? But Aishwarya Rai came with her mother in a Maruti 1000. Okay. In a Maruti 1000. Simple girl. And no tantrums, nothing. No spot boys, no entourage, no managers, nothing. Just the mom is there with her. Wendell Rodrigues is there to style. Yes. Corey Walia is doing hair and makeup. I'm assisting Corey Walia. And I'm helping Corey Walia also. And I have got a funny side to me. And Aishwarya is laughing and laughing and laughing and laughing and laughing and laughing. We're only laughing, and we had such a beautiful... There was no diva behavior, nothing. And that memory of mine has always stayed in my heart. After that, I've never met her, by the way. Okay. After that, what happened was I decided to move on my own, because working on a stipend for me was not really able to make my ends meet. Mm-hmm. So I decided to move on. And I happened to work with a few hairdressers who are very senior, and they used to always tell me that, your craft, you're still getting better. Okay. But your communication skills are impeccable. Okay. Whereas many of the makeup artists are just doing it for करना है। एक शिफ्ट को हमको वो टाइम पे 600 रुपया मिलता था, 800 रुपया मिलता था, 1000 रुपया मिलता था, वो शिफ्ट का पैसा कमाने के लिए। बट तुम दिल से कमाते हो, राइट, अपने दिल से काम करते हो। So when you do something with love,
you always reach a position that intention itself will push you forward in life. Right. I agree. Okay. Yes. So that's what happened with me. My next thing I knew was I was working with Manisha Koirala, a very senior hairstylist called Latika Chata. She put me on to Manisha. So आपको लगता है कि आपने जो एक डिसीजन लिया, आपके दिल की जो आवाज़ थी, आपने जो करियर शिफ्ट किया, that was the best decision of your life that changed everything? वो टाइम पे तो फैमिली वाले तो बोलते थे कि होटल मैनेजमेंट में 3 साल और इतना सारा पैसा वेस्ट कर दिया, Right. और अभी तुम मेकअप में गए हो, और वो टाइम मेकअप में ऐसा कोई रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन नहीं था. एक बराबर. सी वी आर फ्रॉम अ टैमब्राम फैमिली, तमिल ब्राह्मण फैमिली. यहाँ पे तो ज्यादा करके चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, लॉयर्स, यू नो, ऐसे काइंड ऑफ जॉब्स ही होते हैं, व्हाइट कॉलर जॉब्स. Right. Whereas I'm doing something in a film industry. And I'm getting a woman ready, I'm touching her hair and I'm doing here. हमारे घर में ऐसे होता था कि periods के टाइम पे माँ एक कोने में जाके बैठ जाती थी, you know, that kind of stuff and all होता था. मेरे घर में इतना नहीं होता था, but मेरे relatives के घर में ये सब होता था. तो मैं एक बार ये लाइन में आ गया तो मैंने अपना फैमिली से ज्यादा बात करना ही कब बंद कर दिया, बिकॉज मुझे एक मकाम पे पहुंचना था. बिकॉज ये रोज का किट ना मुझसे बर्दाश्त नहीं होता. और मैं उनमें से नहीं हूं जो बहस करूंगा या झगड़ा करूंगा. अगर तुम में कोई बात मुझे ठीक नहीं लगी, जो मेरा मन में ठेस लगे मुझे तुम्हारी बातों से, तो मैं तुमसे झगड़ा नहीं करूंगा, मैं तुम्हारी जिंदगी से चला जाऊंगा. Okay. और मैंने वही किया. और मैंने अपने आप यहाँ वहाँ, I lived as a PG, I used to sleep on the sofa, you know, guest house में रहा. Okay. ऐसे तो कोई लाइफ कोई easy नहीं है. In spite of working with film stars and all, film stars के लिए of course they have the privilege of living in bungalows and all of that. But for technicians don't have that kind of privilege, right? I want to ask a question related to this, since you mentioned about acceptance, inclusivity. You worked with Shah Rukh Khan and other top actors. How they reacted to your sexuality? Were they welcoming? Because a lot of people would like to know, you know, there are a lot of craze about how the superstars and their take on homosexuality. How do you see this? See, during Dil Se, I worked with Manisha, and Shah Rukh was the lead actor for the film. Shah Rukh was a very, very sweet man. Okay. And he very well educated Delhi boy. And we all were in Ladakh. The hotel didn't have TVs. Okay. And there was no, you know, 1996, there was no, Star TV and all these things and all happening, cable television, sorry. Right. I should not be taking names, whatever. But there was nothing of that sort. And there was just one landline, and he and Manisha would keep fighting over who's going to talk over the landline. I didn't have anyone to talk to, so I didn't talk on the landline at all. But then he was very accepting and he was very friendly. See, there are a lot of people who are watching us right now, and उनमें से काफ़ी लोग हैं जो इस लाइन में आना चाहते हैं. They want to be a makeup artist. They really want to take it as a career. But तुम्हें पता है जैसे इंडिया में होता है, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, मेकअप में क्या करियर है यार. So people don't take it with respect. But those who really want to do it and watching you, looking at you as an inspiration, who did it, who broke the barrier, what you will tell them? कैसे आना चाहिए इस इंडस्ट्री में? See, मेकअप पहले तो एक आपके अंदर से you have to have that kind of इच्छा of drawing. Okay. If you can draw well, मैं बचपन से I have been drawing well. Okay. वो artistry, innate artistic ability होना चाहिए. Correct? ना अगर किसी को एक लाइन ठीक से ड्रॉ करने को, पेपर में ड्रॉ करनी, यहाँ पे तो ये कैनवस जो है हिलता है. Right. करेक्ट. और वही कैनवस को अपना खुद का बुद्धि है. करेक्ट. Very much. It's not like I'm going to if I do something eyeliners wonky, एक आंख बड़ा एक आंख छोटा, तो कैमरा में दिखेगा सब कुछ. Yes. So, and plus the actress will also have a little two bits because she's used to seeing herself in a certain way. Right. So people's skills are also very important. Yeah. Your father and mother may buy you all the fabulous kits to carry. Yeah. But it's not about the kits you carry. It's about your intention. It's about your intention, and to understand very well that it is not going to be an overnight thing. Right. It is a journey.
Hmm. There are no shortcuts. You can do lots of लोगों को मस्का करो, डिजाइनर्स के साथ बैठ के पार्टी करो, एक्टर्स के साथ बैठ के हा ही करो, but ultimately when you're there on set, you are all alone and your work speaks for you. Mhm. If you have the ability to stand up on your own 2 feet, then the sky is the limit. Agreed. Because this is an honest job, Mhm. which even after 100 years, when the new generation will watch it, kahin pe bhi when the credit lines roll, your little bit your name Yes. comes, and that is very rewarding. Yes, I agree. I Don't you understand. feel so? Very much, very much. I can relate with this. So now let's move on to your personal life a bit. How it was like. You know what I'm talking about. Relationship factor and. Hamisha science say I would look out and I would always see the crucifix of the Basilica Okay, of Mount Mary Church का. Right. So I used to ask her, Mama, ये क्या है, cross क्यों है? तो my mother used to say कि, that is the Mount Mary Church and she's very powerful, and she, Mahalakshmi, Haji Ali, Mumba Devi, these are the temples and churches and dargahs and all these places which Bombay is surrounded by, and that's why nothing will ever happen to Bombay. Oh. Bombay is well protected because Bombay has got divine protection. And I Okay. used to believe in my mom, and I used to ask my mom, हम लोग वहाँ पे क्यों नहीं रहते? My mom used to say कि देखो वहाँ पे पैसे वाले रहते हैं. Oh. हम लोग नहीं रहेंगे, but तुम बड़े होके तुम रहोगे वहाँ पे. And today I live in the, it is called manifestation of your dreams and desires. So proud and of I've you. got a chota sa place, but it's my own. Yes. Correct? Like I can say that within Mannat is like within a kilometer away. Yes. So it's close by, Very close much. enough. Yes. So that's my own achievement in my own way, and I Certainly. feel happy. But though she's not here to see it anymore, and then the thing is, I never gave a lot of importance to love relationships and this and that, because I never got love when I was growing up. Most of the people loved me for my physical attributes. Mm-hmm. I was very clear in my mind. Beauty is for 2 days. But your character, the person who you are, if somebody loves you for what you are, then it's going to be a lifelong thing. And it's such an amazing thing that is coming from a makeup person. So I'm glad people are taking this seriously. Yes. Because makeup also at the end of the day it's going to vanish. Is going to vanish with remover and oil and all of that. And when you have inner beauty within you now, there's no need to wear makeup. That the glow of inner beauty is something else. Yes. Of course. Makeup started it. So my one day I went to my friend mentor Corey Valia's house, and I met this young boy who was sitting on his kitchen floor. And I was like, I saw him and I felt a deep connect. Oh. A deep connect. See, I read a lot. Hmm. And I believe in a lot of things, It's not love at first sight. It's something which tells you that I know this person from a feeling which tells you that I know this person from some time before. I don't know what it is. I can't place my fingers on it. And then this boy and I, we became friends, and I mentored him. And today, his name is Laksh, by the way. His real name is Lakshman Singh. I mentored him. And we were for a little bit, we were quite close also. There is a lot of love between us. Okay. And he is a fine hairstylist. All right. He's fabulous. He does hair, shampoo commercials, and okay. He's been taught by Dilshad, who used to be Shah Rukh's hairdresser that time. Oh. So I pulled all the dots, used all my goodwill, and got him to be mentored by Dilshad. Yeah. So today, that's an achievement for me, to have taken a boy from a village. Yes. And given him a chance to do something, which I've done for many, but he is the best. I would say if I wear a crown, he's the crown jewel. Wow.
He's like that. Tell us about Karma. Karma is Laksh's son. And when I met Laksh was a very, very poor boy. And when Karma was born also, Karma's mom was not very, healthy. She almost, her blood turned septic. And All right. the doctors had given her 10% chance to survive. So what happened was Laksh said that, my wife is not going to live and the child is in the 7th month. They're going to do an emergency C-section to get the child out. But because he's an oxygen deprived child, the child may not have buddhi like you and me. He might be mandabuddhi. Okay. But he might be autistic or something not like us. Yes. Like how we think. So I told him, no problem. I don't have a baby. You've never given me a Guru Dakshina. I want your baby. Oh. And he started crying and he said that, okay, that's the only thing I can give you. Oh. And he gave me his baby. Oh. And then the baby, his wife also recovered. The baby also became okay. We all lived in my Pune flat for 9 months. Wow. And they all came to Bombay, hale, hearty and healthy. And today I have a family. It's not about blood relation. It's a soul it's more than family. that, yes. This is which I enjoy. We have chosen, we are souls which have chosen each other to be part of each other's lives. Yes. That's so cute. Yes. All right. I want to ask you one important question because this is not just an enlightenment but making a statement क्योंकि बहुत लोग ये सोचते हैं जैसे आप drag करते हैं you wear women's clothes. I mean, there is no label for a cloth, but specifically as they say, women's clothes. जब आप वो करते हैं तो बहुत लोग ये सोचते हैं कि अब चलो अभी इसने लड़की के कपड़े पहन लिए तो अब ये ट्रांसजेंडर बनेगा, ये ऑपरेशन करेगा, सेक्स चेंज करेगा. I want to know, is that true what the people believe? नहीं बाबा, I am very happy as a man. देखिए, मैं बचपन से ये सब करता आया हूँ. मैं अभी ये टेलीविजन में देख के कुछ मुझे लेडीज कपड़े पहनने का मेरा फेमिनिन साइड बहुत स्ट्रांग है. ओके. बचपन में भी माँ बोलती थी शिव जी का एक रूप है अर्धनारीश्वर. सो व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग मेकअप आफ्टर दैट आई हैड disposable income, I had money and I could get stuff and I used to not go the Indian way then. That time for me it was all Kumar is very Western and I would wear a little black Chanel kind of a dress, not Chanel, but a little black dress with high heels and this and that. But that was when I was in my 20s. Now I'm 48 and I feel that now the little black Chanel dress will look fabulous on me, but let the bacche log wear all that now. Wow. Now I'll wear my beautiful handlooms and kanthas and Banarasi and patolas and all the pay my tribute to all the Indian weavers. Wow. And I feel very good when I wear a sari. But I don't wear a sari to titillate. It is just to, today whatever I am, it's because of women. If women had not allowed me to touch their face. Of course, yes. Do you think I would have been sitting here you would be interested even to talk to me? It's as simple as that. Right. So I thank all those women of my life who've been there part of my life, who have knowingly, unknowingly given me so much of love. God bless all of you. Oh. You can name some of them. I can name Manisha Korala, Latika Jatar, again she's a hairstylist, Dilshad Kastakia, Lara Datta. Lara has come here twice. When I bought this flat, I was running short of money and Lara, of course, gave me a small little loan. Oh. And I paid her off, but who does it? Very much. Right. Sushmita has come here. So it's kind of nice people with heart. Very. Though I don't call them up every day and hello, how are you, this, that, hobnobbing and no, nothing of that sort. But I met Sushmita in the airport 5-6 months ago. And she was there in the smoking section and I went there and she was wearing a huge Chanel glasses and smoking and and she said, oh my God. And we both looked at each other and we started talking and everybody's looking at us. But then for me, I see the heart. They bare their soul to me a lot of times, which the public cannot see. That is the relationship I have with them. Sure.
Okay, now it's time to talk about your kitchen journey. So tell us, when was the first time, पहली बार कब था जब आपने किचन में जाके कुछ बनाया और क्या बनाया था स्पेसिफिकली? किचन में सी मेरे घर में तो हम लोग बिकॉज मिडिल क्लास खानदान से थे, ऐसा कोई नहीं था कि नौकर चाकर ये वो। मैं माँ के साथ भाजी लेने जाता था, सब कुछ करता था। पर मैं 4th स्टैंडर्ड में था कि माँ एक दिन गीता क्लास के लिए या कुछ दोपहर को गई और फिर आते आते माँ फिसल के गिर गई और उनका हाथ फ्रैक्चर हो गया। ओके। तब क्या करें, पापा काम पे जाते हैं, सिस्टर को इतना इंटरेस्ट नहीं है कुकिंग में, तो मैंने बोला माँ को ठीक है मैं ही हेल्प करता हूँ आपको। और मैं 4th स्टैंडर्ड में था तब मैंने फर्स्ट टाइम डोसा बनाया। वाओ। और वो टाइम पे हम मिक्सी विक्सी था, बट माय मदर यूज्ड टू स्टिल ग्राइंड द डोसा इन द पत्थर का दैट ट्रेडिशनल वे। अभी तो मेरे पास वो मोटर वाला वेट ग्राइंडर है, बट पहले वो सब नहीं होता था, सिलपट्टे में मसाले पीसते थे, वो सब होता था। वो टेस्ट स्वाद कुछ अलग ही था। तो माँ से सीखा मैंने दिवाली के स्वीट्स कैसे बना। और हमारे घर में भी त्योहार को बहुत ज़्यादा हम लोग सेलिब्रेट करते थे। दिवाली होती थी, गणपति में होता था, मोदक बनते थे, दिवाली में मिठाइयाँ बनती थी, अपना नवरात्रियों में होता था, और लॉट्स ऑफ थिंग्स क्रिसमस में भी होता था। और बिकॉज वी यूज्ड टू हैव अ फ्यू मुस्लिम्स, माय मदर यूज्ड टू मेक शीर कुरमा फॉर Eid also. Wow. So it was a beautiful Bombay, 80s and all, before all this happened. So you are not like somebody who having the Kerala impact, you have like Bombay impact on your food culture? I have Kerala impact in my food because that is what I am, from inside. Yes, right. अभी भी मैं नीचे बैठ के मैं अपने प्लेट में वो ही खाना खाता हूँ, केरला स्टाइल का वेजिटेरियन खाना खाता हूँ। But then when course of my travels, when I know about food, I know about nouvelle cuisine, I know about the Larousse gastronomique, and I also know about the 13-course French menu and all these type of things, which I learned when I was doing my hotel management. Okay. I've also eaten a lot of non-vegetarian from A to Z. From alligator to zebra, I've eaten it all. Oh. No, I don't want to use other words in between. I might get arrested. Yes. Because right now what is going on. So I've eaten a lot of all that. But then, ever since Karma was born, I decided, no, enough is enough. Abhi koi non-veg खाने की ज़रूरत नहीं है. You just chill मारो अपना. Okay. And that's it. I stopped. I'm drinking alcohol also. Oh, good for you. Yeah. All right, so what you are gonna cook for us today? See, because I'm a South Indian, the thing is, a lot of people they say sambar. Sambar. Yes. It is not sambar. It is sambar. Very Okay. much. But sambar is different according to the different. Right. Okay. In it's Coimbatore, it's made differently. In Palakkad, it's made differently. In Udupi, it's made differently. In Bangalore, it's made differently. In Hyderabad, it's made differently. And Mumbai, in Madras, it's made different. Mumbai, it's made differently. But the sambar which I am going to teach you all to make is the Palakkad. Palakkad is a district on the border of Tamil Nadu and Kerala. And a lot of the Tambrams live there. We use an amalgamation of both Tamil cuisine and Malayalam cuisine. All right. So we use a little bit of coconut and all in our sambar, which gives it more body and more taste. Oh. And so that sambar I will teach you. And also ukdiche modak. Do people say ukdiche modak, it's so difficult? It's not difficult. It's one of the easiest things. Anything cooked with love. Yeah. Is easy. And today, coincidentally, is Sankashti Chaturthi. Yes, today Sankashti. Yes. Oh, yes. Such an amazing coincidence. Yes. That we are making ukdi se modak. I'm really excited to make. So now let's get to the kitchen and see what Kumar is doing. And I'm sure I'm gonna get a very good lunch today. And I'm really excited. Let's see. We're first gonna make sambar and then we're gonna make ukdi se modak. Let's see the ingredients and method of sambar. Sure, let's go. So, come, let's go. Yep. So now we are in Kumar's kitchen और हम सबसे पहली चीज़ बना रहे हैं वो है सांबार. And let's see कि उसके लिए क्या ingredients लगते हैं, क्या क्या सामग्री लगती है और फिर हम देखेंगे कि सांबार कैसे बनाया जाता है. How to make sambar in Kumar style for sure. So let's come. आइए. First we will use tuar dal. Okay.
Tuar dal, the tuar dal which I'm using is organic tuar dal, but you can use any tuar dal. Organic tuar dal, why? Because it's good for health. There are no pesticides and all used while growing it. That's why. Okay. And the dal, I have kept it inside water for around 15 minutes. You soak it in water and then it will go inside the pressure cooker. On this dal, I'm going to be adding a little bit of haldi powder. Okay, haldi powder, you don't need to add too much. You can just add like quarter a teaspoon of haldi powder. And if you have, this particular dal is not very easy to digest. So you need to put hing. Okay, iska you have to just put powdered hing is pe dal diya. Or it's ready to go inside the cooker. तुअर दाल में I put all the haldi powder and the hing. उसको एक छोटा सा प्रेशर पैन में डाल दिया है. Okay. Now I'm going to keep this on the gas. और इसको कम से कम 3-4 सीटी आपको you'll have to लगना चाहिए. एंड सांबार के लिए साउथ में जैसे हम लोग बनाते हैं केरला में पालाकाड में we use this madras cucumber. Okay, madras cucumber is a type of a cucumber. If I cut it and show you, don't need the whole cucumber. This is how it looks. Okay, इसके अंदर छोटे छोटे seeds होते हैं. Also, you don't take the seeds. The seeds नहीं, because seeds digest नहीं होगा body के अंदर. Okay. तो आपको ये clean करना पड़ेगा. So are we going to take half of the cucumber? हाफ ही cucumber हाफ ही यूज कर रहे हैं अभी. cucumber को काट लिया है मैंने, इतना ही लगेगा. कोई quantity इतना नहीं बना रहे हैं हम लोग. So I think around 200 grams, that's more than enough. Okay. And this is कद्दू. इस कद्दू बहुत ज्यादा पका हुआ नहीं है, तो इसका सीड्स ऐसे करके हम लोग निकालते हैं. So we are not taking the seeds. सीड्स नहीं, बिकॉज सीड्स बॉडी के अंदर डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा. और फिर यू कांट, ये जो कद्दू का सीड्स है ना, उसको एक्चुअली उसमें फॉलिक एसिड वगैरह होता है. Okay. बट यू कांट पुट इट इन अ सांबार. Alright. The other vegetable which we have is moringa. It's called moringa drumstick, moringa kai, and in Marathi Shevgachi sheng. what? Shevgachi sheng. And Hindi में क्या बोलते हैं? कुछ फली फली बोलते हैं वो लोग. This is very very good for health. And सांबार में see you these two vegetables तो डाल ही दिया. अभी इसके ऊपर से now I'm going to be adding the फली also. There is no need to actually remove the छिलका. I don't think 4 vegetables से ज़्यादा यूज करना, 4 किस्म के vegetables से ज़्यादा यूज करना चाहिए. Because कुछ ज़्यादा ही vegetables हो जाएंगे तो सांबार में it's not a vegetable curry. It's more like a gravy kind of thing. Okay, yes. तो भिंडी को पहले मैंने धो के ये कपड़े में I've just kept it like that so that ये extra पानी सोख ले. और कभी-कभी मार्केट में छोटे-छोटे भिंडीज आते हैं. ये ऑर्गेनिक भिंडीज हैं, तो इसके लिए ये थोड़े बड़े लग रहे हैं. बट ये छोटे-छोटे भिंडीज भी आजकल आते हैं मार्केट में, तो वो अगर मिल गया आपको, it will be great. See, that's a lot of vegetable. 4 vegetables हम लोग ने यूज कर लिया, so that's more than enough. So these are the chopped vegetables. So there is this grass cucumber and bhindi and what? We have this pumpkin. Yes. Pumpkin, yeah. Pumpkin is a slightly कच्चा pumpkin. Yes, and drumsticks. So we have 4 vegetables. इसमें मैं थोड़ा सा नमक डाल रहा हूँ स्वाद अनुसार. नमक पहले से ज़्यादा मत डालिए, बिकॉज अगर बहुत ज़्यादा नमक हो गया तो भी प्रॉब्लम है. सो बाद में नमक को बढ़ा सकते हैं, बट वेजिटेबल्स को ज़रूर नमक में कुक करिए, नहीं तो क्या होगा, कद्दू और कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा जल्दी कुक हो जाएगी. तो इसके लिए थोड़ा सा नमक अब्जॉर्ब हो जाए, इसके लिए वी आर डूइंग दिस. एंड यू कैन पुट इट इन द प्रेशर कुकर और इसको 3 सीटी मारना है बस. So now these are the vegetables. Now we will see how to prepare masala. Like Kumar is somebody who's
who believes in cooking own things, own masalas, own spices. So he's gonna teach us how to make sambar masala by yourself in your home. Let's see that. इमली टैमरिन, ओके, जितना चाहिए उसके हिसाब से हम लोग ले सकते हैं. एक लेमन साइज बॉल का इतना साइज का इमली इज मोर देन इनफ, बिकॉज क्या होता है इमली से बहुत खट्टापन भी ये होता है. इसको मैं बॉईल करने के लिए रखता हूँ. सांबार के लिए इमली का पानी इज द बेस. सो इसको निकाल के इतना इमली बहुत हो गया. It's more than enough. We can add it. It's fine. If you don't want to use boiled water, you can use like warm water. Okay? And keep this for 5-10 minutes. तो वो बहुत सॉफ्ट हो जाएगा. और फिर अभी तो बहुत गर्म है, अभी मैं टच करूंगा तो मेरा हाथ जल जाएगा. तो इसको we can't touch it right now. Yes. तो इसको यहीं पे अब हम लोग रखते हैं थोड़ी देर के लिए. ये जो पानी बच गया है गर्म पानी, इसको हम लोग साइड में रखते हैं. बिकॉज वाटर इज अ प्रेशियस कमोडिटी. वी कांट कीप थ्रोइंग. इमली को पानी में डाल दिया, गर्म पानी में. गर्म पानी में हाथ डालने से अच्छा, अपने हाथ को जलाने से अच्छा, यू कैन यूज दिस बिलोना. ओके, दिस बिलोना इज यूज्ड फॉर व्हाट? इट्स यूज्ड टू मेक दही एंड ऑल दैट. बट इट्स वुड, तो कोई रिएक्शन तो नहीं होगा. एंड दिस इज आल्सो बोन चाइना, तो इसमें भी कोई रिएक्शन नहीं होएगा. You have to just make sure that whenever you make sambar ना, आप स्टील के बर्तन में जरूर बनाएं. Don't make it in aluminum बर्तन्स. Okay. Because aluminum again, it's bad for health. Okay. First, I'll take some chana dal. Okay. Chana dal is one teaspoon only, and 1 teaspoon of methi seeds, fenugreek seeds, and you can have 2 tablespoons of coriander dana, which is also called dhania. And these are these chilies, Guntur chilies. बहुत spicy है, तो मैंने 3 ही रखा है. ऐसा नहीं कि you will get sambar powder and all in the market, but इससे आप बनाओ तो you know कि कितना मसाला जा रहा है आपके खाने में. Okay. Correct? तो and there is coconut also. इन सबको गैस के ऊपर मुझे एक हल्का सा सॉटे करके इसको पीसना है. Yeah. First I'm putting the chana dal. The next one is मेथी डाल दिया. Okay, you know why I'm putting it in this order? Because first chana dal takes a while to roast, to इसमें सॉटे करने के लिए. और जो ऑयल यूज कर रहा हूँ मैं, it's plain groundnut oil. Okay, it's cold pressed groundnut oil. और इस पे ये धनिया भी डाल दिया है. गैस अभी थोड़ा सा कम कर सकते हैं, नहीं तो क्या होएगा, दाल वगैरह जल जाएगा. जस्ट मेक श्योर दैट इट इज अ लिटिल बिट ऑफ कम कर दिया. थोड़ा सा जीरा भी लगेगा. जीरा बिकॉज इट्स गुड फॉर डाइजेशन. Now these chilies are very very pungent, so I'm putting whole of them. Just 3 बहुत है. क्या होता है कि बहुत तीखा बना तो सकते हैं, बट क्या होता है एक टेस्ट के लिए भी, एक तो खट्टा है और तीखा है. Your stomach should also be able to handle it. There are some people who are used to eating spicy sambar. It's okay. And I'm putting the coffee. Okay. ये मसाला हो गया. इसको थोड़ा सा आप तो गिव देम रेडिश टिंज आएगा. यू सी, हम लोग ने रोस्ट किया है उसको. काली अभी ठंडा हो गया है, उसको निकाल के ठंडा कर दिया है. इसको काली
there's a nice smell, flavor coming up. Yes. You can add a little bit of water once it's थोड़ा सा हो जाए. नहीं तो क्या होगा? Powdering ठीक से नहीं हो पाएगा. Now you add the water. This is the sambar masala. Now ये जो मसाला मैंने पीस लिया है, इसको दाल के साथ मिलाना है. वापस सीबिलोना काम आएगा. You mix the whole thing to this. Put the gas on and let it simmer for 5 minutes, 5 or 10 minutes. Yeah, make sure that all the ingredients get cooked very well. Now this will boil, and then you have to do a tadka of for the tadka you just have to use a little bit of ghee and a little bit of rai and jeera. That's it, and you put the tadka in. Now I'm doing the tadka. And I'll need a little bit of rye. Okay. And you can also add as a garnish towards the end a little bit of hara dhania. Okay. I'm chopping the hara dhania. Reduce the gas in case it's too much. Once it splutters, you can add it. See, I can smell it. I can smell it. I wish you could smell it on your screens. But day is not far off when you can get. We can do that, yes. You can do that as well. This is almost done. Okay. See, this is spluttering. Oh, and now that's done. And this sound is very. Yes. It's great to the ears. The sound of completion? Yes, it's the sound of completion. The sambar is done. You can shut it off. Alright. So अभी हमने just बनाया एक delicious sambar and we are really excited to taste this. But before that we are making another one. That is Ukdi Se Modak, Maharashtrian speciality. And since today is Sankashti Chaturthi, we are offering this to Lord Ganesha, his favorite food. Yes. So let's see and let's learn Ukdi Se Modak from Kumar and how to do it. So first we'll checking the ingredients, then we will see how to Ukdi Se cook. Modak is also called known as Parkatai in Kerala and Tamil Nadu and in the south. Okay. So It's the recipe is the same. First I'm using elaichi, full elaichi, cardamom. Okay, because there is a saying, that any thing you add elaichi as an offering to the gods, it immediately, you must have heard this from your mom. Yeah. That's why you put elaichi in kheer, and so whenever you're powdering elaichi, make sure you put a little bit of sugar to it. Okay. So then you can uniformly get a very uniform texture. Because elaichi is a little hard to bite, and right now the elaichi is all into a fine powder. Okay. Okay, and the other ingredients are, if you take 1 cup of chawal ka atta, you get it in a shop. Okay, I have used organic chawal ka atta, and this is. Jaggery powder, which is also called gudka powder. Okay, this is also organic because for obvious health reasons, no pesticides or chemicals mixed. And this is coconut which is being grated. ठीक है? Yes. तो अभी इसको हम लोग यही 3 है. इसके अंदर का मोदक के अंदर का जो पाक है वो उसके लिए है और ये ऊपर से स्टफिंग के लिए. See, I'm taking 1 teaspoon of ghee.
ghee is melting. Let it melt fully. You can increase. Here I'm using a heavy bottom cast iron pan so that it doesn't stick too much to the bottom. Otherwise, scraping the coconut off the bottom, because coconut tends to burn on its own. So you need something like a heavy bottom pan. Okay. See, right now I'm sauteing the coconut, which has been grated coconut. Okay. While it's being done, in the other gas, I've kept a little bit of water, almost like 1 glass of water, and added a little bit of salt and a little bit of ghee to it. This I will be adding it to my chawal ka powder, chawal ka atta, to make it into a firm, smooth paste, so that it will be the covering for the modak. So this need not boil, but it should be like a lukewarm. This can be put off. Okay. Some people prefer a lot more, so I've put the entire thing. And you see it's melting. Make the gas slow. Put the gas off. It's almost melted. Okay, this much heat is enough to melt the whole thing. And then you add the lychee. This is called the puran. Yes. Okay, this is what it is, and the gas is put off. So we are done. Now this has to cool a little bit. This is the chawal ka atta. It's almost like 1 cup. So now this is for the filling of the modak. This water is warm. Just make a hole in the center. Add a little bit of water to it. And crumble it. Mix it well. So थोड़ा सा इसमें पूरन लग गया है. right. So जो आटा था, आटा को हमने भिगाया, बॉईल करके उसको अच्छे से स्टीम गरम पानी में अब बनाया. उसमें जब ये हम स्टफिंग भरते हैं, जिसको हम सारण या पूरन बोलते हैं मराठी में. He's teaching me how to do it. I have never done this, but I've seen my mother doing it. But he's the one who's teaching me now, so I'm trying. This has to be. It's almost like a sweet momo. Yes. And if your palm is slightly wet, nothing will stick to your palm. Ta-da. Now it looks like a पूरन बच गया घर में So लड़की this होने is वाली है. what we have done so far. My mother used to say घर में अगर पूरन बच गया तो लड़की पैदा होगी. Oh. तो लक्ष्मी आने वाली है करके. Okay. Yeah. पलक्कड़ सांबार बनाने के लिए हमें लगेगी ये सारी सामग्रियाँ. तुअर दाल 1 कटोरी, मद्रास ककड़ी, कद्दू, फली और भिंडी, एक छोटे बॉल के आकार की इमली, 1 टीस्पून चना दाल, 1 टीस्पून मेथी के दाने, 2 टीस्पून धनिया के दाने, गुंटूर मिर्ची 3, कसा हुआ नारियल 1 कटोरी, हल्दी, हिंग, जीरा, राई, तेल और घी.
सबसे पहले हम 1 कटोरी तूर दाल को पानी में 15 मिनट तक भिगाने के लिए रखेंगे। इसमें हम ऐड करेंगे 1 चुटकी हींग और थोड़ा सा नमक। अब इस मिक्सचर को हम प्रेशर कुकर में लगाएंगे और 3 से 4 सीटियाँ लेंगे। अब हम सारी सब्जियों को अपने पसंदीदा आकार में काटेंगे। इन सब्जियों में हम ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी, आधा टीस्पून हल्दी और 1 टीस्पून नमक। अब इन मिक्सचर को हम ऐड करेंगे प्रेशर कुकर में और 3 सीटियाँ लेंगे। अब थोड़ा गर्म पानी हम अपने इमली में ऐड करेंगे और इमली को अच्छे से मिक्स करके पानी में इमली का पानी तैयार करेंगे। इसके बाद हम तेल को गर्म करेंगे, उसमें हम ये सारी मसाले की चीज़ें हैं वो एक एक करके ऐड करेंगे। सबसे पहले हम ऐड करेंगे चना दाल, उसके बाद हम ऐड करेंगे मेथी के दाने, उसके बाद धनिया के दाने और इसके बाद हम ऐड कर सकते हैं थोड़ा सा जीरा। फिर उसके बाद हम ऐड करेंगे गुंटूर मिर्ची और आखिरी में हम ऐड करेंगे कसा हुआ नारियल। इस मिक्स को अच्छे से तेल में फ्राई करेंगे और थोड़ी देर रोस्ट करने के बाद गैस बंद करके इस मसाले को हम साइड में रखेंगे। जब ये फ्राई किया हुआ मसाला ठंडा हो जाएगा, हम इसको मिक्सर में ग्राइंड करेंगे। ग्राइंड करते वक्त इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि उसकी अच्छे से एक पेस्ट बन जाए। देन ये ग्राइंड किया हुआ मसाला हम ऐड करेंगे अपनी पकी हुई तूर दाल में जिसको हमने उबाला था और अच्छे से मिक्स करेंगे। इसके बाद ये मिक्स हम ऐड करेंगे अपनी उबली हुई सब्जियों में और 5 से 10 मिनट तक सारे मिक्सचर को हम गैस पे पकने देंगे। इसके बाद हम तड़का देंगे। उसके लिए हम एक बर्तन में घी लेंगे। उस गरम घी में हम ऐड करेंगे कुछ जीरा और कुछ राई। जब जीरा और राई स्प्लैटर होना शुरू हो जाएगा, हम ये सारा मिक्सचर ऐड करेंगे सांभर में और ऊपर से कटी हुई धनिया ऐड करके हम सांभर को गार्निश करेंगे। आपका पलक्कड़ सांभर रेडी है। उकड़ी से मोदक बनाने के लिए हमें लगेगा 3-4 इलायची का पाउडर, 1 कप चावल का आटा, 1 बाउल गुड़ का पाउडर, 1 बाउल कसा हुआ नारियल और 1 टीस्पून घी। सबसे पहले घी को एक नॉन स्टिक तवा में हम मेल्ट करेंगे। उसके बाद उसमें कसा हुआ नारियल डालेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। जब नारियल को गोल्डन ब्राउन कलर प्राप्त होना शुरू हो जाएगा, उसके बाद हम ऐड करेंगे उसमें गुड़ का पाउडर। अच्छे से मिक्स होने के बाद जब गुड़ पाउडर मेल्ट होना शुरू हो जाएगा, उसमें हम ऐड करेंगे इलायची पाउडर और अच्छे से मिक्स करेंगे। जब मिक्सचर अच्छे से मिक्स हो जाएगा, उसको हम गैस बंद करके बाजू में रखेंगे जब वो नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाएगा। अब हम 1 गिलास गर्म पानी में 1 चुटकी नमक ऐड करेंगे और ये पानी हम ऐड करेंगे अपने चावल के आटे में। अब चावल के आटे को अच्छे से भून लेंगे और इसमें छोटे छोटे बॉल साइज शेप बनाएंगे। अब हर एक शेप को हम अच्छे से दबाएंगे जिसका आकार हम एक रोटी या चपाती जैसा बना लेंगे और इसके बीच में हम ऐड करेंगे हमारा नारियल और गुड़ का मिक्सचर जो हमने पहले बनाया है। अब हम सारे बाजुओं से ये मिक्सचर को फोल्ड करना शुरू करेंगे आटे में। याद रहे, जब ऊपर का यानी बीच का सेंटर हम जब ऊपर खींचेंगे तब उसको एक मोदक का परफेक्ट लुक आ जाएगा। आपके उकड़ी से मोदक तैयार है। With the sambar, obviously, you can't eat the sambar with the modak. So I've made some My favorite idli. Please, And I please love serve it. yourself. Sure. Feel at home. And guys, there are two special guests who joined us today, and very special guest here. Karma, say hello. And we have Laksh. Thank you, both of you, for joining us. It's a pleasure to have you. Karma is my godson Oh, and Laksh's son. And Laksh, I have mentored him. And today he's a very good hairstylist and he's like family to me. how was your experience being on the show? Tell me. It was fabulous actually. I am a trained, Wow. I have trained in the kitchen. But I've left it back long time back. As आपको पता होगा कितने साल, तो मैं 25 साल हो गए मेकअप नहीं करते हुए। तो अभी रोज तो खाना बनाता हूँ, पर ऐसे फ्रेंड्स के लिए वापस खाना बनाना, वो भी कोई शो के लिए पहली बार बना रहा हूँ। तो होपफुली आप मुझे माफ करें अगर Oh, ठीक से they're gonna नहीं love आए, you. और अगर अच्छा है तो प्रशंसा भी करे, उससे भी अच्छा लगेगा मुझे, है ना कर्मा? I really love this food, especially sambar.
I was telling him the sambar that we make, ऐसा सांबार नहीं खाते हम, मसाला डालते हैं, रेड कलर डालते हैं. We Maharashtrians do that a lot, but this is actually typical sambar, which I really liked it. And like I said, I never tried some of the vegetables. For example, this South Indian cucumber. The chutney is really good. What I liked is he only put the salt just once, and it was perfect. I like my own food. Cheers. This is my little idli over here. Oh yeah. He's my biggest critic. He's my biggest fan. Karma. Liked it? Oh. He's my little motak. Yes. Come on, tell me He's my- what food you like the most. That Appa cooks. Appa cooks. You call it Appa, right? Which is the best, your favorite recipe that he cooks? He cooks pasta. Wow. You do that? Yes. What about you? So what the... You like everything? Very good. So it was good. I met Kumar Uh-huh. the time when I was really in need of food, Oh, okay. and I don't know how to tell you, but then the experience, whatever Kumar could make, Mm-hmm. I could eat like whole thing. All There right. was a time Kumar used to make for both of us because I started joining him and Okay. working with them. Mm-hmm. 2 times of food in the afternoon he could make. So we could eat in the morning and save something for the evening. Right. And I was the one, and this gentleman just used to cook and eat. And I just started eating. I finished whole thing. It's Oh, not even for them. You know, I'm wired with a mother. mother. So I felt that mother's love and the so like a soulful food. Okay. So I've been eating for past almost 12 years. Wow. So everything whatever cooked by Kumar is like fabulous. I'm so glad. Okay, let's try modak. Yes. I'm going to be using the hands. Of The hands course, are please do completely- it. Oh, I got the get the. I just went. I don't even wash my hands. And That's I don't, okay. I'm And trying I this. don't even want the modak. Mm. Is it cooked? Yeah. Just bite. It's like I have one last question for you. I told you that I will ask you at the end. What is that one thing left in life? What's that one dream that you feel that, okay, I achieved this, now I'm complete, my life is full? I always wanted to have a child. And God has given me a child also now. Oh, Now my dream is to learn Ayurveda, okay. especially in Kerala, and I plan to start a homestay over there and provide livelihood to women over there. Mm-hmm. Because Kerala is most of the people leave the state and go abroad for employment. But teaching the women how to be self-reliant, and that's what I want to do next. That's such a sweet thought because, you are always been a giver. And that's why you said you're a heart of a mother. And I really feel very nice because these are the two things, I must say, this is not, I don't want to make it very personal, but these are two things that I loved my mother cooking the most. Idli, sambar and modak. And this is such an coincidence that I get to visit all that. Thank you. So it's a personal, emotional ride for me and it's very, very special. So it was a pleasure having you here. Thank you once again. So we are not just thankful to Kumar and to be a part of this show, but वो इस शो का हिस्सा हुए इसलिए हमारे पास कुछ गिफ्ट हैम्पर्स हैं उनके लिए जो हम उन्हें देंगे. So we are thankful to our brands who have sponsored us and been our sponsorship partners for the product. First we have Fresh and Go perfumes. This is new age perfume, easy to use, pocket friendly and no alcohol. So this for you. Oh wow, this is quite amazing. You know what? Yes. Every time I travel in a plane and they have taken You can use my that. 150 ml ka big bottle, Yeah. this would be ideal. Yes. Thank you. And we have some food items, from Naturally US, noodles and a pasta. You will be really happy to know why this, because Naturally US is India's #1 superfood organic brand. It's organic food, plus they are providing
livelihood for 15,000 people, Fantastic. and that's why you will love it. So this is specifically for you love pasta, right? And he loves pasta, and it's gluten-free pasta. Normally pasta is wheat pasta. Yes. This is gluten-free pasta. And this is red rice noodles. Again, very easy to digest and good. All right, now the special gifts from Swagdeal. Swagdeal, our presenter. So this is a lovely cap for you. Okay. That is for my little hero. Cute. There you go. Look in the camera. Do this. Okay, this is a special mug that I have designed personally, and you will love it. But before I give it, I want to say something to you. You are inspiration, और आप लोगों ने वो टाइम पे स्ट्रगल किया है जब सोशल मीडिया नहीं था. आज जो हमें इजी लाइफ मिल रही है वो आपके टाइम पे नहीं थी. फिर भी यू आर देयर, यू लिव्ड योर लाइफ. आपने आपके दिल की बात सुनी और अपने आप को खुश नहीं किया, तो यू हैव inspired other people, given them a beautiful life to live, and you got it back in form of this cute kid. And you are such an inspiration. I'm not saying it to end up the show. Since the time I got in touch with you on call, I felt very positive, and I'm sure what this show has given me already a new friend. Thank you for being. This is for you, and that's what defines you. Thank you. My God, Rainbow Warrior. I love this. I love the colors of the rainbow, you know. And he is also my little Rainbow Warrior. Oh, Karba, what are the colors in the rainbow? Red, orange, yellow, green, blue, indigo, violet. yay! There you go. The Rainbow Warriors. So thank you so much. I'll give you a Thank little you. hug. Laksh, come. Oh, yes, please do. Come. Thank you. It was a lovely meeting you all. Thank you all. Thank Thank you. you. Can God I bless. take this now? Oh, you Of can. course. You Of can. course. It's yours.